Hello students, so this is lecture 6, architecture and pin diagram. So in last lecture we have discussed the architecture of the 8086 and about the pin diagram. Okay, so in 8086 architecture there are main two functional units. So one is called bus interface unit that acts as a bridge in between the microprocessor and the memory or output devices. Okay, and next is execution unit. So this execution unit will decode and fetch the decode and execute the instructions. Those are being fetched by the bus interface unit. Okay, it means fetching का जो work होगा that will be performed by this bus interface unit. एंड एग्जीक्यूशन यूनिट बेसिकली क्या करेगा, जो इंस्ट्रक्शन बस इंटरफेस यूनिट ने फैच किए हैं उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस. ओके, so this is what the architecture of 8086. Already we have covered this topic, and so you can see this is what software model of the 8086. So this is what software model. So you can see this is the memory, all memory space, the memory segment, that is 5 times 0 to 5 times fh, and whole memory segment is divided into different segment. So this is code segment 64K byte, data segment, stack segment, extra segment, and something for the external memory address space, and so okay. So this is instruction pointer, code segment, register. These are the registers. Okay, so this code segment register will hold the base value of this code segment. Okay, similarly the data segment register will hold the base value of this data segment, and similarly for the stack segment and extra segment. So it means a segmentation register will hold the base value of the corresponding segment. Okay, suppose code segment register code segment की base value hold करेगा. सिमिलरली डेटा सेगमेंट रजिस्टर डेटा सेगमेंट का जो बेस वैल्यू है, स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू है, उसकी वैल्यू होल्ड करेगा बेसिकली. ओके, उसका एड्रेस होल्ड करेगा बेसिकली, because the 16 bit, these are 16 bit register. Okay, similarly these are general purpose registers, stack pointer and base pointer register, and these are called index register. Okay, so so this is showing what memory map. Okay, this is showing the memory map starting from 0000 to FFFH. Okay, and this is also showing the input output address space. So showing this is showing the input output capability. It means how many input output devices can be connected, or so not connected, interfaced. Okay, with 8086. So maximum starting from 0 to 0000 to FFFF. Okay, so next is pin diagram. So this is the pin diagram of 8086. So we have already discussed the common pin signal. Okay, uh, let me mark. So we have already studied about this. Okay, this is ground, and this is what multiplexed address bus dedicated for the interrupt, clock, ground, then again VCC, and these are called multiplexed address status bus. And okay, now we will study about this. Okay, this is what this is deciding the operating mode of the processor. Okay, if it is 1, then it means this is in minimum mode. So if it is 0, it means 8086 will work in maximum mode. So RD bar means just for read, and okay, so these are the minimum mode signal, maximum mode signal, and minimum mode signal. Okay, and test, ready, reset, all we have already covered this, these pins or signals in your last lecture. Okay, so we have also covered how the latching is being done, 20 bit address. Okay,
एंड बफरिंग द डाटा बस, लैचिंग मीन सपोज एड्रेस और डाटा बस से आपने एड्रेस को किस तरह से सेपरेट किया, देन बफरिंग द डाटा बस मींस एड्रेस डाटा बस से आपने डाटा को कैसे आपने सेपरेट किया, दो बाई डायरेक्शनल बफर्स हमने यूज किए थे। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ आपने एक सिग्नल्स यूज किया था, लैचिंग किस तरह से हमने देखा था लास्ट टाइम। सो ओके, कॉमन पिन्स आर व्हाट 32 because 8086 is having 40 pins. Some of our okay 32 pins are common and 8 pins are dedicatedly for minimum mode or maximum mode. सपोज एट ए टाइम तो सो माइक्रो प्रोसेसर की जो 33 पिन है बेसिकली डिसाइड करेगी कि ये मिनिमम मोड में वर्क कर रहा है या फिर मैक्सिमम मोड में वर्क कर रहा है बेसिकली। सो बेसिकली ये जो पिन रह गई है वो पिन है बेसिकली BHE बार और S7 सिग्मा। ओके, सो BHE का फुल फॉर्म होता है बस हाई इनेबल। ओके, so bus high enable is used to enable the higher order data bus. Okay, so that is a higher order data bus कौन सी हो जाएगी D8 to D15। so इसको बेसिकली इनेबल करने के लिए बेसिकली यूज होता है। BHE जब भी 0 होगा तो इट मींस D8 to D15 आप सेलेक्ट कर सकोगे। ओके, सो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माइक्रो प्रोसेसर का बेसिकली मेमोरी बैंक का कंसेप्ट। ओके, so let us discuss that. So this BHE signal is basically used to provide the higher 8-bit address, 8-bit address, and higher 8-bit, not address, higher 8-bit data bits. Okay, so basically higher 8-bit का मीनिंग क्या हो जाएगा D8 to D15। okay, so basically we have 20 address lines। okay, and 20 address line means maximum memory that can be allocated, that is equal to what, maximum memory is equal to what, 2 to the power 20 means 1 MB, 1 megabyte। सो 1 मेगाबाइट, सो मैंने आपको एक कंसेप्ट बेसिकली बताया था 1 किलोबाइट का। बेसिकली क्या कंसेप्ट होता है 1 किलोबाइट का? सो देयर आर 1024 बाइट्स, suppose this is what 1024 bytes and each location is having of 8 bit, 8 बिट का डाटा। सो ये तो मीनिंग हुआ बेसिकली 1 केबी का। सिमिलरली अगर 1 MB को मैं लिखूं तो 1 MB। ओके, सो 1 MB कैन बी रिटन एज 1 KB into 1 KB, 1 KB 10 to the power 10, 1 KB 10 to the power 10, तो 10 to the power 2 to the power 10, 2 to the power 10 means 2 to the power 20। okay, so we can say this is what 1 KB means 1024 KB, this is 1024। okay, so 1024 KB, so half of it, this is what 512 KB and 512 KB। okay, so what is the concept that the whole memory is divided into two banks, so like this and like this। so this will be of 512 KB and this will be of 512 KB। okay, and each location contain the 8-bit data। similarly this is what 8-bit data। okay, so actually what we have seen that the whole memory is divided into two memory bank। okay, so like this, so we have 1 MB memory। okay, 1 MB memory, it means 1024 kilobyte। okay, so half of it, this will be 512 KB। okay, so it means this is 512 KB। okay,
और ये भी आपका क्या हुआ 512 KB का, बिकॉज हाफ हाफ आपने डिवाइड कर दिया. So it means the whole memory is divided into two bank. So even bank or odd bank. So actually, okay. One another thing is what we have divided the whole memory into two banks, and the each location of the memory contain the 8 bit. It means at a time यहाँ पे क्या होगा 8 bit data store होगा. So but for some application we want 16 bit data at a time. So how it can be done? So let's discuss. Suppose we have divided this whole memory into two banks. So this is called even bank. Okay. So let this is even bank, even memory bank, and this is called old memory bank. So how it we can say this is even and odd. So the memory location that will start from suppose 000 0. Okay, memory location will start from 00000h, and next this will be what 00001h. Okay, again this will be what 000012342h. So this will be what 00003h, like this. Okay, so this will be 00004h. So this will be 00005h, and so on. And similarly suppose कुछ इस तरह से. So ये कुछ इस तरह से हो जाएगा. Last will be what f f f f f e h, and this will be what f f f f f and h. Okay, so this is called even bank. Okay, and this is called old bank. How we can say this is even and old? So suppose if we, so even bank it means suppose odd और even कैसे बोलेंगे आप? Suppose आपका 3 बिट का डाटा है आपके पास में, so maximum 3 बिट 000 कैसे लिख सकते हो आप? 001 कैसे लिखते हो? 010. अगेन क्या लिख सकते हो? 011. अगेन क्या लिख सकते हो? 100. अगेन क्या लिख सकते हो? 101 110 11. सो लास्ट में ये जो 1 आ रहा है, सो ये 1 किन के आ रहा है? ये इसका इक्विवेलेंट क्या है? 1 3 5 7. सो एलएसबी जिनका 1 है, सो वो क्या है? ऑड मेमोरी बैंक में, ऑड मेमोरी लोकेशन है. सो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ऑड मेमोरी बैंक, राइट. और सिमिलरली 0 जिनके आ रहा होगा उसको क्या बोलेंगे आप? ऑड मेमोरी, सॉरी इवन मेमोरी बैंक. ओके, so basically BHE bar basically provide the higher data bit. Okay, so BHE basically used to provide higher data bit. Okay, so this so it means so this is what even memory bank, and it is providing us D0 to D7 bits, and this is providing us D8 to D15 bits. Okay, so the each one more thing, so we are getting D8 to D15 from this. Okay, and we are getting D0 to D7 from this bank. Okay, one more thing, so this is like a memory chip. Okay, so each memory bank have a chip, chip signal, chip select signal to select the memory bank. Suppose आपको odd memory bank को select करना है तो आपको क्या करना होगा कि उस chip select signal को select करना होगा basically. Similarly अगर even bank को select करना है तो आपको क्या करना होगा कि even उसके तो even ये this is like a memory chip. So memory chip का कोई ना कोई एक basically क्या होगा? एक chip select signal होगा. So like suppose this is chip signal. So chip signal for what? Odd.
सो लो एक्टिव होता है बेसिकली, हमने पढ़ा भी है बेसिकली उसमें, जब भी मेमोरी का हमने किया है, चिप सेलेक्ट एक सिग्नल होता था basically active low. Okay, so for even memory bank, so chip select signal is what, A0. Okay, because this is A0 bit, so A0 bit is what, 0. Okay, A0 bit is 0 in even bank. You can see A0 bit is 0, A0 bit is 0. so जिनमें भी A0 bit 0 होगी, so वो अगर आपने A0 0 कर रखा है तो इट मींस इवन बैंक क्या होगा, सेलेक्ट होगा बेसिकली। और हायर के लिए क्या होगा बेसिकली, BHE प्रोवाइड द हायर डेटा बाइट। सो हायर डेटा बाइट आपको यहाँ से मिल रही है, तो बेसिकली ये आपको दिस विल बी व्हाट, BHE का बार। ओके, सो इवन एड्रेस के लिए A0 जो भी होगा वो क्या होगा, 0 होगा बेसिकली। ओके, देख सकते हो आप, 0 0 एंड 0। और जो ओड एड्रेस होगा उनके लिए क्या होगा, 1 होगा बेसिकली। ओके, सो बेसिकली बेस्ड ऑन द BHE एंड A0 आप क्या कर सकते हैं, डाटा बाइट आप सेलेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ व्हाट, मेमोरी बैंक। ओके, सो बेसिकली अब आपको समझ में आया। सो फॉर इवन even address, even memory address, A0 is what, 0, and for odd memory location address, or you can say location, A0 will be 1. Okay, clear? Is it clear? So okay, you can say 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0. Okay, so you can say this is what, A0, A1, A2, A3 and so on. So only we are talking about A0. So A0 जब भी 0 है तो देखो, this is even number, this is even, this is even, this is even. So even number के लिए जब भी होगा, so even, this is even, even and even. So for the even memory location, A0 will be what, 0. So means A0 जब भी आपने 0 कर रखा है, A0 it got 0, तो it means कौन सा मेमोरी बैंक आपका सिलेक्ट होगा, इवन मेमोरी बैंक। और जब भी A0 आपका 1 होगा तो इट मींस कौन सा मेमोरी सेलेक्ट होगा आपका, कौन सा मेमोरी बैंक सेलेक्ट होगा, ऑड। ओके, सो अनदर, ये तो हुआ A0 आपका चिप सेलेक्ट सिग्नल फॉर द इवन बैंक के लिए। ऑड बैंक के लिए जो चिप सेलेक्ट सिग्नल होगा वो होगा क्या, BHE। हमने पढ़ा है बेसिकली, बस हाई इनेबल टू प्रोवाइड द हायर डेटा बस, higher data byte. Okay, so based on the A0 and BHE, so data byte is going to be select. So for suppose okay, so जिस चिप से आपको A0 कनेक्टेड है, so suppose A0 is 0, so it means आपने even बैंक तो सेलेक्ट कर लिया, बट उससे जो आपको डाटा मिलेगा that will be what, D0 to D7। and suppose BHE is 0, so it means which memory bank will be activated. So when BHE is 1, BHE is 0, so this is low active signal, so BHE is 0, so that time odd memory bank will be selected and you will get D8 to D15. Okay, so you can see here in this memory bank, this is memory map. So whole memory, this is what, 0002 FFFH. So this is 1 megabyte memory. So this 1 megabyte memory can be divided into two banks. So this is what, odd memory bank, and this is even memory bank. So based on the location of the bits, or based on the bits of A0. So A0 is 0, then it means even memory address, even memory location. If A0 is 1, so it means that is odd memory locations. Okay, so the whole memory, 1 by megabyte memory is divided into 512 kilobyte and 512 kilobyte. Okay,
So like this we have different type of memory bank. So this is odd memory bank and this is even memory bank. You can say this is what 8086 8086 microprocessor. So this will contain 20-bit address is being latched. Okay, so this is what latching of the address, 20-bit address. So this is BHE signal. So whenever BHE signal is providing us what uh, the higher data byte. So higher bit data byte means this is D8 to D15. You can see this is D8 to D15. So whenever this memory bank is selected, so that time you will get the higher data byte. So if you select this memory bank, say this is even memory bank. So this even memory bank is selected whenever A0 is 0. A0 is 0. So whenever even memory bank is selected, so that time you will get D0 to D7 lower data byte. Okay, so you can say you can also see from this truth table. So when both are 00, it means whole word will be available. Whole word means 16-bit data will be available. Okay, so in your starting slide we have discussed that. So although the each memory location is having 8-bit data information, but sometimes we want 16-bit data too at a time. So whenever we want the 16-bit data at a time, so A0 must be 0 and BHE must be 0. So we will get the 16-bit data at a time. So similarly, if BHE is 0 and A0 is 1, so you will get the upper byte. Okay. And similarly, if an BHE is 1 and A0 is 0, so you will get lower data byte. Okay. If both are 1 1, then it means you will get none. Okay. It means bus will be idle form. So this was the all about the common pin signal of the 8086. So now we have minimum mode signal. So whenever this pin is at 1, then suppose this pin is set at 1, so it means microprocessor will work in minimum mode. Okay, single processor. So first is what first minimum mode signal is what MIO bar. So this is what M for memory, IO means input output. So whenever this is 1, so it means memory related operations only, or whenever it is 0, so it means input output related operations perform only. Okay, and next is what INTA का bar. So this is what this is interrupt acknowledgement. इंटरप्ट आपने दिया, सो देन उसका अक्नोलेजमेंट, बेसिकली ये अक्नोलेजमेंट शो करेगा. ओके, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, जैसे होल्ड का अक्नोलेजमेंट था. और नेक्स्ट एड्रेस लैच इनेबल. सो एड्रेस लैच इनेबल आपने स्टडी कर लिया बेसिकली. सो व्हेनेवर ALE विल बी एक्टिवेटेड, सो दैट टाइम इन मल्टीप्लेक्स डेटा बस पे आपका एड्रेस अवेलेबल होगा. सिमिलरली मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस स्टेटस बस पे भी एड्रेस अवेलेबल होगा. सो बेसिकली ये डीमल्टीप्लेक्सिंग मल्टीप्लेक्सिंग के लिए बेसिकली यूज हो रहा है ALE सिग्नल. सो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, आपने पूछा भी था कि हमें कैसे पता लगेगा. सो विद यूजिंग ALE सिग्नल you will be able to know so whether the multiplex address data bus is having address or data, or multiplex address status bus is having address or status. Okay, so next minimum mode signal is what DT/R bar. So ये भी हमने स्टडी कर लिया बेसिकली. सो whenever it is 1, so it means डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर डाटा ट्रांसमिट कर रहा है, और 0 होगा दैट मींस माइक्रो प्रोसेसर रिसीव कर रहा है बेसिकली. ओके, एंड नेक्स्ट इज व्हाट DEN बार. सो ये भी हम स्टडी कर चुके हैं बेसिकली. ये बेसिकली शो कर रहा है क्या, ये लो एक्टिव सिग्नल हो गया. सो डाटा इनेबल, सो वेदर डाटा इज इनेबल और नॉट. So next is what WR bar. It means write signal को low active signal है ये basically. So 0 होगा तो it means ये क्या हो रहा होगा basically write हो रहा होगा. Okay. Next 7 is what hold, और ये आपका HRD है. ठीक है, ये जो होल्ड बेसिकली है, होल्ड और HLDA, होल्ड DMA ऑपरेशन के टाइम मैंने आपको बताया था. इट मींस होल्ड सिग्नल कब रेज होगा, जब भी डायरेक्ट DMA कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा
to take the handover of the system bus. So then microprocessor will acknowledge to that DMA controller by raising this HLDA. Okay. So basically, so we have discussed the minimum mode signal. So now this table is representing the transfer type based on the minimum mode signal. So this is what one select किया, it means memory related operation होगा, zero means input output related operation होगा, read means ये low active signal zero किया है तब read होगा, DEN bar means data क्या होगा, data enable. Okay, so basically similarly suppose memory input out ये zero होगा, it means input output related operation हो रहा है, और रीड जीरो इट मीन्स क्या हो रहा होगा, रीड हो रहा होगा बेसिकली. ओके, वन सेलेक्ट किया इट मीन्स आपका रीड. ओके, तो बेसिकली ये ऑपरेशंस आपका ये बेसिकली शो कर रहा है 0 1 1 0 मेमोरी मीन्स आपने 1 1 सेलेक्ट कर रखा होगा, रीड मतलब आपने बेसिकली क्या कर रखा होगा, बेसिकली आपने ये 0 आपने सेलेक्ट कर रखा होगा बेसिकली. ओके ओके. So till now we have discussed about the minimum mode signals of the 8086. Okay. So now we will discuss the minimum mode 8086 system. So basically this is showing the 8086 minimum mode system. Okay. So 8086 will work in minimum mode if one input is applied that at MN/MX pin. So it means microprocessor there will be only single processor. So this is the what the components, or this is what the system with minimum mode signal. So just see the main components are what this microprocessor itself, and these are what latches. So okay, 74373, all we have already studied about this. So in the topic how the 20-bit address are being latched. Okay, then these are the trans receivers or called bidirectional buffers. Okay, how the data are being separated. Okay, so or buffered. So ये भी आपने study किया हुआ है. And next is what clock. This is 8284 clock generator, and these are memory. So memory basically to use to store the data and program, and these are what input output. Okay, input output devices, and this is what generating some signal, read write signal. This is chip select to select the chip memory and input output devices. So basically this is providing the different controlling signal. Okay, to separate the basically data, and we have DEN bar or DT/R bar. So basically these are defining the data is being transferred by the microprocessor, or data is being received by the microprocessor. So to store the data and program we have the RAM or ROM. System may have many ROM, many input output devices. So okay, you okay, और इन सब के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं basically. Okay, this is what latches. So this is what three latches, 74373 or 8282. Okay, this is all about the 8086 system with minimum mode signal. So now we will discuss the read cycle timing diagram for the minimum mode. Okay, so कैसे read operation perform होता है basically. Okay, so चलो देखते हैं. So this is the read timing diagram for the minimum mode system. So you can see this is clock. Okay, so whole operation is divided into 4 T state. Actually this is T1, T2, T3 and T4. Okay, this is TW means waiting state, because microprocessor is what a very fast device, and to access the data sometime microprocessor can wait for some time, because the peripheral devices or input output devices through which microprocessor is about to read some data or information, so that will
that can also raise the ready signal with 0. So that time microprocessor have to wait some time. So that is this wait cycle or wait clock. Okay. So this ALE signal. So initially what we want, actually we want the address. Okay. So initially we want the address from the multiplex address data bus or multiplex status bus. So whenever ALE goes to high, so that time we will have address address. Okay, that time we want the address, only address from the multiplex address data bus. We want the there will be address. So the this multiplex address data bus will carry the 16-bit data, and similarly same time the multiplex address data bus will carry the address, only address. Okay, similarly. Okay, so it means the initially for the T1 state, in the T1 state, uh, with the ALE high, we will be having only address. Okay, and the subsequent state when ALE goes to low, so that time status will be available at the multiplex address status bus, and data will be available at the multiplexed address data bus. And whenever the ALE signal will goes to low and data is available, so data is available is showing by this DEN is goes to low. So whenever that then will be data is enabled. So that time read signal goes to low, it means read operation will be performed. Or okay, and DTR bar is also low because now this time microprocessor is receiving. Okay, so receiving data, not transmitting. Transmitting means write operation. So ओके, सो बेसिकली एएलई सिग्नल जब भी हाई हुआ तो इट मीन्स आपके पास में एड्रेस हुआ, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस. सो नेक्स्ट साइकिल के लिए आपके पास में स्टेटस होंगे. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा कि फर्स्ट टी साइकिल के लिए फर्स्ट क्लॉक साइकिल के लिए आपके पास में एड्रेस अवेलेबल होगा बिकॉज एएलई सिग्नल क्या है, हाई है. नेक्स्ट के लिए आपके पास में डेटा अवेलेबल होगा. सिमिलरली जब भी डेटा आपके पास में अवेलेबल है देन आप क्या करोगे, रीड सिग्नल आपने लो किया तो मीन्स डाटा आपका क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा. देन अगेन जैसे डाटा रीड हुआ तो उसको हाई कर सकते हो आप. सिमिलरली ये डाटा रीड कब होगा, जैसे डाटा इनेबल हुआ और ये डाटा रिसीवर भी सिग्नल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरी रीड ऑपरेशन. सो नेक्स्ट इज व्हाट राइट साइकिल टाइमिंग डायग्राम फॉर द मिनिमम मोड. So till now we have covered the read cycle timing diagram for the minimum mode. So let us discuss the write cycle timing diagram. So this is the write cycle timing diagram for the minimum mode. So okay, same concept is same. So similarly T1, T2, T3, TW. So TW आप assume भी कर सकते हैं और TW के बाद T4 भी लिख सकते हो बेसिकली. ओके, कोई इशू नहीं है. बेसिकली TW का लॉजिक ये है कि अभी लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था मैंने बेसिकली आपको कि माइक्रो को भी पेरिफेरल डिवाइस से आपको एक्सेस करना है, डाटा रीड या राइट करना है. सो समटाइम माइक्रो को कुछ थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है. ओके, तो ये डिस्कस किया था बेसिकली वेट कितना टाइम वेट करेगा और किस सिग्नल के थ्रू वेट करेगा वो, जब तक कि माइक्रोप्रोसेसर सपोज माइक्रोप्रोसेसर वांट टू एक्सेस एनी पेरिफेरल डिवाइस और इनपुट आउटपुट डिवाइस. So first microprocessor will send the data request. If that device is ready to transmit or to transmit the data to allow the access to the microprocessor, then it will send the signal, the ready signal. If it is not ready, then it will send the ready 0. Then it means microprocessor has to wait for some time. So this is what TW or waits. Okay. So as the ALE is high, so that time multiplex address data bus will be having address, and for the next T state there will be data available. Okay, and then again in the multiplexed address status bus, yeah, initially when ALE is high, so that time address will be available, and for the next cycle there will be status. And similarly whenever we want to write the data, so first just DT will be 1, so it means data transmitted, so data transmission for the microprocessor, so that time this signal will goes high.
and similarly data is enabled, so this will be what low, and WR will be similarly low because we have to write the data. Okay, so this is all about the write operation for the minimum mode. So now we will discuss the maximum mode signals. So there are three status lines, say S0 bar, S1 bar, or S2 bar. So these are representing some status. So 3 bits. So it means based on the 3. So suppose this is 000. It may be 001. So it is 000. It means it will uh, interrupt knowledge. Okay, 001, it means read input output port, and if it is 010, then write input output port, right output port होगा basically, लेकिन input output port ही बोला जाता है. So if it is 011, then halt. Okay, and if it is 100, then it means ये basically code को access कर रहा होगा. And if suppose this is 101, so it means read the memory. And if suppose this is 110, then it means write memory. And if it's suppose 111, so that is what not used. So this is all about the status pins. Okay, so three pins और signal हमने discuss किए, S0 bar, S1 bar, S2 bar. So next is QS0 and QS1. So basically this provide the information about the status of code prefetch queue. Basically तो prefetch instructions हैं, prefetch codes है, instructions है, उसकी queue के बारे में information आपको बताता है. So basically if both is 00, it means no operation, कोई भी ऑपरेशन वहां परफॉर्म नहीं हो रहा होगा. ठीक है, एक 6 बाइट का प्रीफेच हाई स्पीड रजिस्टर है ना, जिसमें मेमोरी से वो क्या होगा कि इंस्ट्रक्शन प्रीफेच यहाँ पे स्टोर होंगे, जिसका साइज कितना है 6 बाइट. ओके, सो उस क्यू के बारे में डिस्कस हो रहा है यहाँ पे. सो दी 00, इट मीन्स वहां पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा होगा. 01 मीन्स फर्स्ट बाइट ऑफ code from QUE. सो ऑप कोड की जो फर्स्ट बाइट है वो क्यू से फैच हो रही होगी बेसिकली. एंड देन नेक्स्ट इफ 10, देन इट मींस क्यू क्या है, एम्प्टी है. और इफ इट इज 11, सो फर्स्ट बाइट ऑप कोड से फैच हो चुकी होगी, देन नेक्स्ट सब्सिक्वेंट बाइट from the queue. Okay, so this is all about the QS0 and QS1. Okay, so basically queue में कितने बाइट का इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रीफेच होगा, बताया था मैंने आपको आर्किटेक्चर में 6 बाइट का बेसिकली. ओके, सो बेसिकली इस प्रोसेस से क्या होगा कि बेसिकली जो एग्जीक्यूशन जो प्रोसेस होगी वो फास्ट हो जाएगी, फास्ट एग्जीक्यूशन. ओके, और इसी को ही बोलते हैं पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट बेसिकली. सो एक टाइम फैच हो रहा होगा, दूसरे टाइम आपका एग्जीक्यूट हो रहा होगा. ओके, सो बेसिकली दिस इज शोइंग द ऑपरेशन ऑफ द क्यू. सो ये 1 2 3 4 5 6 बाइट का डाटा बेसिकली इसमें मेमोरी से फैच होगा बेसिकली. सो बेसिकली क्यू किस तरह से वर्क करती है. सो कुछ इंस्ट्रक्शन 1 बाइट के इंस्ट्रक्शन होते हैं, 2 बाइट के भी होते हैं, 3 बाइट के इंस्ट्रक्शन होते हैं. सो सपोज पहले उन इंस्ट्रक्शंस का क्या होगा, डिकोड होगा, देन फिर क्या होगा, फैच हुआ, यहाँ पे फैच होके यहाँ पे स्टोर हो गई, देन डिकोड होगा, देन एग्जीक्यूट होगा.
So first, just suppose this Q is nothing, suppose high speed, this is what high speed registers. ओके, सो इजीली हम और हाई स्पीड से इनको एक्सेस कर सकते हैं बेसिकली. सो हेयर प्रीफेज इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग stored, and size of this memory is what 6 byte. So this is what Q. Okay, so first step is what, first decode the first byte of opcode. सो सिंपली सपोज फर्स्ट ऑपरेशन हुआ कि फर्स्ट बाइट का जो ऑप कोड है यहाँ पे पहले डिकोड हुआ. अब वो चेक करेगा बेसिकली कि इज इट वन बाइट ऑप कोड इंस्ट्रक्शन, कि ये वन बाइट कोड का इंस्ट्रक्शन है या फिर टू बाइट का है कि थ्री बाइट का है. इफ सपोज अगर कोई बहुत सारे इंस्ट्रक्शन वन बाइट के ही होते हैं, सो वन बाइट का इंस्ट्रक्शन अगर होगा तो देन क्या होगा, देन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन बाय द एक्सेप्टिंग डाटा फ्रॉम द क्यू. देन अगेन फिर क्या होगा, अगर वन बाइट का इंस्ट्रक्शन है तो वन बाइट का इंस्ट्रक्शन वो डिकोड हो चुका है. देन वो वेट किसका कर रहा है बेसिकली, अब वो वेट कर रहा है बेसिकली डेटा का. सो जैसे उसको डेटा मिला वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा. अब अगर ये वन बाइट का नहीं है देन क्या होगा, देन अगेन सेकंड क्या करेगा, वो ऑपकोड की जो नेक्स्ट बाइट है जो कि यहाँ पे स्टोर है बेसिकली, अगेन यहाँ पे क्या होगा बेसिकली डिकोड होगी. ठीक है, डिकोड होने के बाद में जितनी भी बाइट है सपोज डिकोड होके उसके बाद में फिर वो क्या कर रहा होगा बेसिकली, अगेन सेम प्रोसेस परफॉर्म करेगा बेसिकली, कि डेटा का वो वेट करेगा और अगेन आपके पास में जो ऑप कोड है वो डिकोड हो चुका है. अब जो भी डेटा ऑपरेंड जो भी है उसके बेसिस पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और सिमिलरली सेम प्रोसेस ये क्या होगी, चलती रहेगी. सो दिस इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द क्यू. So next is RQ bar, GT bar 0 and RQ bar, GT bar 1. So basically RQ stands for what? Request. And GT, RQ means request, GT means grant. Okay. So basically 8086 supports the multi-user configuration. Suppose this is 8086 microprocessor. This is 8086 MUPI microprocessor, and suppose this is bus controller, or bus, say it is bus master. So what it do actually? So in 8086 microprocessor, it supports the multi-user configuration. So it means multiple user will use the same microprocessor. So suppose एट ए टाइम सपोज कोई एक यूजर माइक्रोप्रोसेसर को यूज करना है आपको, तो उस टाइम बेसिकली बस कंट्रोलर क्या करेगा कि एक रिक्वेस्ट, एक सिग्नल सेंड करेगा माइक्रोप्रोसेसर को कि वेदर इट वांट टू यूज दैट. ओके, सो वो बस कंट्रोलर का यूज करके बेसिकली, सो बस कंट्रोलर बेसिकली एक माइक्रोप्रोसेसर को एक सिग्नल सेंड करेगा. वो सिग्नल जो सेंड करेगा वो सिग्नल क्या होगा, रिक्वेस्ट सिग्नल सेंड करेगा माइक्रोप्रोसेसर. अब माइक्रोप्रोसेसर को बस कंट्रोलर या बस मास्टर ने एक रिक्वेस्ट सिग्नल सेंड किया, इट मींस वो रिक्वेस्ट कर रहा है बेसिकली कि माइक्रोप्रोसेसर से वो एक्सेस करना चाह रहा है या कोई डाटा ट्रांसफर या कोई टास्क परफॉर्म करना चाह रहा है यूजर कोई भी. ठीक है, देन माइक्रोप्रोसेसर अगर उसको रिक्वेस्ट ग्रांट करता है तो वो एक सिग्नल, एक क्लॉक पल्स का सिग्नल, जैसे रिक्वेस्ट सेंड किया वैसे ही एक सिग्नल सेंड करेगा, वो होगा सिग्नल क्या, जीटी मतलब ग्रांट. ओके, सो इस टाइप से बेसिक प्रोसेस होगा. अब सपोज जैसे ही ये टास्क परफॉर्म होता है, सो जैसे ही टास्क परफॉर्म होने के बाद में जो मास्टर बस कंट्रोलर या बस मास्टर जो है वो एक लो सिग्नल बेसिकली जनरेट करेगा सिग्नल, ताकि माइक्रोप्रोसेसर को ओके जैसे लो सिग्नल ये सिग्नल जनरेट करेगा कंट्रोलर माइक्रोप्रोसेसर को 8086 को, देन अगेन 8086 माइक्रोप्रोसेसर जितनी भी सिस्टम बस है उन सब का कंट्रोल अपने पास में ले लेगा. इट मींस जो भी ऑपरेशंस यूजर परफॉर्म कर रहा था वो ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है. सो चलो फिर से समझते हैं. देखो जैसे बेसिकली ये मल्टीपल यूजर कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है. सो सपोज ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है बस कंट्रोलर का यूज करके. सपोज एट ए टाइम एक यूजर 8086 माइक्रोप्रोसेसर से सपोज कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको, तो वो बेसिकली एक रिक्वेस्ट सिग्नल सेंड करेगा. सो रिक्वेस्ट सिग्नल सेंड करेगा तो 8086 वापस फिर से रिटर्न करेगा
ये 1 clock pulse का एक सिग्नल जो ग्रांट मीन्स परमिशन ग्रांट, ओके ठीक है, ओके यू कैन यूज इट, डाटा ट्रांसफर कर सकते हो या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। सो जैसे यूजर ने डाटा ऑपरेशन परफॉर्म किया, देन ये लो एक्टिव सिग्नल का वापस सिग्नल रेज करेगा बस कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर को। वो ये सिग्नल इंडिकेट करेगा बेसिकली कि माइक्रो प्रोसेसर फिर से सिस्टम बस को रीगेन कर ले, ओके बेसिकली सिस्टम पूरा का पूरा कंट्रोल फिर से ले ले, ओके। सो कुछ इस तरह से बेसिक परफॉर्म होता है बेसिकली। सिमिलरली आर क्यू जी टी जी आर क्यू बार जी टी बार 0 का और आर क्यू बार और जी टी बार 1 का सेम टाइम क्या हो सकता है कि सपोज को दूसरा भी यूजर जो भी है वो भी एक्सेस के लिए ग्रांट मांग सकता है उस टाइम। सो उस टाइम जो रिक्वेस्ट सपोज आर क्यू और जी टी बार इस सिग्नल की जो इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। किसके कंपैरिजन में, आर क्यू बार जी टी बार 1 के कंपैरिजन में, ओके। एंड लॉक बेसिकली क्या होगा, दिस इज लॉक बार, ओके। सो लॉक इफ इट इज 0, ये बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है, सो इट इंडिकेट्स दैट रिक्वेस्ट फ्रॉम द अदर बस मास्टर इज नॉट ग्रांटेड, मीन सपोज कॉल ऑपरेशन इज बीइंग लॉक्ड, इट मीन्स समवन इज एक्सेसिंग, कोई ना कोई एक टास्क परफॉर्म कर रहा है बेसिकली, ओके। सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द maximum mode signal. So now we will discuss the maximum mode 8086 system. So this is the 8086 with the maximum mode, okay. So so the components are basically all are same like in minimum mode system. So this is first component is what microprocessor itself, then clock generator to generate the clock, then latches to latch the 20-bit address, then again data buffer, this is what transceiver, okay, and these are the RAM or ROM memory to store the data or program, okay. Simply this is what chip signal for the to select the odd banks or even memory bank, okay. O for odd, E for even, okay, okay. This is for input output devices, and simply this is there are some chip select logic, okay. Suppose this is like A0 and all, and again this is what this is different, okay. This is what bus controller or bus master basically. So controller is controlled, or whole operation of the bus controller is controlled with the S0 bar, S1 bar, S2 bar. So these S0 bar, S1 bar, S2 bar is provided by the microprocessor itself. These are from 24 to 31 pin. Okay, so these are maximum mode signal. So maximum mode signal के through 80 sorry bus controller जो भी 8288 है वो operate होगा basically, and it will provide the this MRDC, MWDC, IORC or IOWC. So this is what MR means memory read cycle, MWD memory write cycle. So input output read, input output write, okay. So basically here okay, these are also providing the ALE signal DEN and DT by R bar, okay. So DT by R bar is for what to data transmit and data receiving, and this is this time this is active high signal, okay. So this is basically this is all about the maximum mode 8086 system. So now let us discuss the read cycle timing diagram for the maximum mode. So this is the read cycle for the timing diagram from the read operation. So simply clock, so T1, T2, T3, T4. So this is what called one bus cycle. So whenever ALE is high, so that time address will be available at multiplex address status bus and multiplexed address data bus. So data is available for the one clocks for the one clock, okay. For the one clock ALE will be high, so that time address there will be address at multiplex address data bus and multiplex address data bus, okay. And simply status signals, so these are status signals. So status signals are
high for the active for the 2 clock cycle, then again deactivate, then again active. Okay, so in starting, so multiplex, so this status signal will be high to perform the some task, okay, to do the some task, and these are this status signal will also control the bus controller or bus master. Okay, so ALE and S2 S2 bar to S naught bar, then here will be the address for the first T1 state. Okay, similarly here will be the address. So then again, okay, so we have to read, so memory read signal will goes to low. So this is showing the what read operation. So whenever we have to perform the read operation, so that time MRDC will be low. So because this is denoting what memory read cycle. Okay, so this time we are receiving the data. So it microprocessor is receiving the data. So obviously dt by r bar will be what low. Okay, simply. So DE in bar will be 1. Okay, because this is what active high signal. So in minimum mode signal, DE in bar, there will be DE bar. So here DEN. Okay, so whole operation is same like that was in minimum mode system. So this was all about the read operation. So this is read timing diagram. So now we will discuss the write cycle timing diagram from for the maximum mode. So this is a simple operation like read operation, but there will be write signal will be there, and we have to perform the write operation. Okay. So timing diagram is same as was in read. So this is T1, T2, T3, T4. Okay, almost this is almost same. So here will be only write signal will be there. Okay, and DT will be high. Okay, DN will be low. Okay, all things are almost same. So okay, so ALE high, तो it means एड्रेस अवेलेबल होगा मल्टीप्लेक्स एड्रेस स्टेटस बस पे. सिमिलरली मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस पे भी एड्रेस अवेलेबल होगा, एंड सेम टाइम जो स्टेटस सिग्नल्स हैं वो भी क्या होंगी, एक्टिव होंगी. ओके, देन अगेन डाटा ट्रांसमिट करना है तो 1 होगा और डाटा इनेबल लो हो जाएगा बेसिकली. और ये बेसिकली ओके, ये दोनों सिग्नल्स तो बेसिकली दे हैव सेम पर्पज होते. सो बेसिकली दिस इज शोइंग व्हाट मेमोरी राइट. सो दिस मेमोरी राइट आपको करना है, तो मेमोरी और इनपुट आउटपुट राइट आपको करना है. सो दिस इज लो एक्टिव सिग्नल. सो आपका जैसे एक्टिव लो हुआ, डाटा अवेलेबल डाटा आपने अवेलेबल है तो उसको आपने राइट कर दिया बेसिकली. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरी राइट. ओके, राइट ऑपरेशन फॉर द मैक्सिमम मोड.